Hello, how are you students? Welcome back in the second lecture of science. So, in the second lecture of science of class 10th, in the first lecture, we had discussed about the carbon and its compound. In the first lecture, we had started the chapter number 4 and it is carbon and its compounds, and in that particular lecture, we had studied about the formation of bondings, types of bonds like ionic bond and covalent bond, and after that in that particular lecture we will we had studied about the formation of different types of electron dot structures of different compounds. Now in this lecture we will start with the another important topics and another important points, and it is first of all why carbon does not lose or gain 4 electrons. So this is our first question. कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज और गेन क्यों नहीं करता है? And secondly we will move on the most important topic, and it is hydrocarbons. So in this particular lecture we will learn about the formation of bonds by carbon and hydrogen, and here we will learn about the formation of hydrocarbons of different molecular compounds like methane, ethane, propane and butane. So firstly we will start with the why carbon does not lose or gain electrons. Why does not lose or gain total 4 electrons? So in this case, first of all we know that carbon has atomic number 6. So the atomic number of carbon is 6, so that's why it contains 6 protons, means 6 positive ions, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So 6 positive ions, and similarly 6 electrons means 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So here 6 protons and 6 electrons, that it contains 6 protons and 6 electrons, that's why it is neutral in state. Now in the bonding, carbon wants to combine with the another element or with the another atom. So look, to get neutralization, to get neutral state, it requires total 4 electronic configuration for this carbon will be 2 and 4 because number is 6. So total in the first cell 2 electrons are filled, and in the second 4 electrons are filled. So in this case, if it is gains 4 electrons, then it becomes stable, and if it loses 4 electrons, then it becomes stable. If it is gained 4 electrons, so electronic configuration will be 2 and 8, and if it is loses 4 electrons, electronic configuration will be 2, and both are stable conditions. So if it gains 4 electrons, so how many positive ions are available in the case of carbon? So there are total 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So already 6 proton उसमें है, and already 6 electrons हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this represents this one. Now it is gaining 4 extra electrons, 1, 2, 3, 4. So in this case it becomes 6 protons and 10 electrons. So it will be difficult to handle it becomes difficult to handle the 10 electrons by 6 protons. So it cannot be handled by 6 protons. So means it contains large negative charges, so it becomes electronegative ion and known as a carbon anion. So this is the first condition if it gains 4 electron.
Now in the second case, if it loses 4 electrons, then what happens? So look, there are the total 6 protons, 1 2 3 4 5 and 6, and 6 electrons थे उसमें. So out of that 6 electrons, it loses 4 electrons. So how many electrons are remain? So 1 and 2. So here positive charge is increased, that's why it becomes electropositive ion, and it is known as a carbocation. Cation means increase in positive charge. Positive charge is increased over here. So here 6 protons and 2 electrons are remains. So it will be also difficult now to, if it is loses 4 electrons. So जो bonding होता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में, that requires high amount of energy to gets break down. उनको तोड़ने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है. सो एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन से निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दिस इज वेरी बिग इन द केस ऑफ कार्बन. सो दैट्स वाई 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सो उसके लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. It is impossible to provide that energy. That's why it is not losing 4 electrons. So in this case, it will form covalent bond with the another element. So this is the reason why carbon does not lose or gain 4 electrons. Now, second question is, what are the hydrocarbons? And this is also important. So hydrocarbons, the organic compound completely made up by the carbon and hydrogen. Organic compound जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से completely बने होते हैं, that are the hydrocarbons. For example, diesel, petrol, gaseous fuel like CNG, methane gas, all are the things made up by the carbon and hydrogen. In our day-to-day life, more than 10 lakh products are available of hydrocarbons. So in this particular topic we will learn about the hydrocarbon. So organic compound जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना होता है, this is known as the hydrocarbons. Now types of the hydrocarbons, what are the types? So hydrocarbons basically generally categorized as a paraffinic hydrocarbon, aliphatic hydrocarbon and aromatic hydrocarbon. But here we are just considering a basic types, and paraffinic, aliphatic and aromatic में से ये सारे types मिलते हैं. So alkane, alkene, alkyne and last one is aromatic. So there are the total 4 types of hydrocarbons. First alkane, and in the alkane type of hydrocarbon there are the only single bond between carbon and carbon is formed. कार्बन एंड कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म होता है. इन द केस ऑफ अल्कीन डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एंड इन द केस ऑफ अल्काइन बिटवीन 2 कार्बन्स ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड. So this is the condition. If the single bond is available between 2 carbons, so it represents alkane group. If the double bond is available between 2 carbons, so it represents alkene group, and if the triple bond is available between 2 carbons, it is alkyne group. So that thing you should remember here. Now the nomenclature of hydrocarbons. अब hydrocarbons के different name कैसे दिए जाते हैं, कैसे पता चलता है दिस इज मीथेन, दिस इज इथीन, दिस इज प्रोपाइन, हाउ वी विल आइडेंटिफाई इट? सो फॉर दैट हियर द टेबल विच इज गिवन हियर, इफ इट कंटेन्स 1 कार्बन, सो वी विल यूज प्रीफिक्स मीथ. 2 कार्बन्स अवेलेबल हैं हाइड्रोकार्बन्स में, सो वी विल यूज ईथ. 3 कार्बन्स अवेलेबल हैं, देन वी विल यूज प्रोप.
For 4 carbon, bute is used. For 5 carbon, pent is used. 6 carbon, hex. 7 carbon, hept. 8 carbon, oct. 9 carbon, non. And 10 carbon, dec. So these are the prefix. Prefix means जो name के आगे लगता है. So this thing you should remember in your mind. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आएगा सो आगे के नोमेनक्लेचर में कोई भी दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी आपको. सो ये पता होना चाहिए. इफ इन द हाइड्रोकार्बन देयर आर टोटल 6 कार्बन इज प्रेजेंट, सो इन दैट केस द हाइड्रोकार्बन विल स्टार्ट विद द हेक्स. नाउ अब उसके बाद वाला स्टेप क्या आता है? कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कितनी है? सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है. फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ अल्केन, हियर वी विल यूज सफिक्स एन. सफिक्स मीन्स इसको लिखने के बाद, प्रीफिक्स को लिखने के बाद उसके पीछे ANE लगाएंगे. And we know that in the alkane, single bond is formed between 2 carbon. So I am taking here example. First is single carbon, and we know that carbon has 4 valency. 4 जो बॉन्ड हो गए वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा. सो 1 2 3 4 एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन ओनली, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स जो सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन में से ही बने होते हैं. सो 1 2 3 4 ऑल वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड. सो दिस इज CH4 मीथेन. Now the second case, there are the 2 carbons and between 2 carbons single bond is available. So 2 carbons eth, 2 carbons है इसलिए eth लेंगे. And the carbon, the between carbon single bond is available and remaining valency 1 2 3 4 1 2 3 4 are satisfied. Remaining 3 valencies are satisfied by the hydrogens. So this compound is called 2 carbons, we will use eth and we will use suffix n. So eth plus n, it will be ethane. Similarly 3 carbons, तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड. सो इसकी 3 वैलेंसीज, ये यहाँ पे बॉन्ड कर लिया. सो 1 2 3, ये यहाँ पे भी बॉन्ड किया, यहाँ पे किया. सो 2 वैलेंसी रिमेन्स 1 2, here 3 again and hydrogen से satisfied कर दिया. So this is your 3 carbon. So we will use prop and this is the single bond hydrocarbon. So from alkane group, so we can say we will use suffix as a n. So it will be propane, prop plus n. So this is your example of propane. In propane, so in propane there are total 4 carbons we know, and total 4 carbons 1 2 3 4, and between all the carbons there are the single bond. सो सिंगल बॉन्ड इसका एक इसके साथ, इसका एक बॉन्ड इसके साथ, दूसरा इसके साथ. सो ये जो फॉर्म हुआ बॉन्डिंग, आफ्टर दैट द रिमेनिंग वैलेंसीज दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म किया. सो टोटल 4 बॉन्ड्स. सो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. रिमेनिंग वैलेंसीज जो थे सब हमने हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड किए. So in this case I will obtain 4 carbons. So 4 carbons means we will use prop and suffix as a n, so it will be propane. It is also written as a 1 2 3 4, so C4, and hydrogens are 10, that's why C4H10. Similarly you can form up to 10 carbons. Try to form all the hydrocarbons up till 10 carbons and make and label the nomenclature of that hydrocarbons. Do it by yourself. Now the second hydrocarbons are alkenes, and we know that alkene types of hydrocarbons contains
double bond between two carbons, means at least one double bond होना चाहिए. So फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन एक कार्बन वाला पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म, इट नेवर फॉर्म्स डबल बॉन्ड विद द हाइड्रोजन, and to form a double bond two carbons are required. That's why it is starting from double carbons. So here two carbons, between two carbons double bond, and remaining valency दो यहाँ पे हो गई 3 and 4, 2 here 3 and 4, 2 here 3 and 4. So C2, this is C2, and how many hydrogens? H4. दो कार्बन eth group, we know that we will use for the two carbons prefix is eth, and डबल बॉन्ड है सो अल्कीन है, सो अल्कीन के लिए सफिक्स यूज करेंगे इन, सो इट विल बी इथीन. थर्ड एग्जाम्पल इज propene. Propene means there are the three carbons, and between two carbons this is the necessary condition that double bond, at least one double bond is available between two carbon. This is the necessary condition. सो यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, सारे वैलेंसीज जो बाकी थे यहाँ पे दो हुए, सो 3 and 4, यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 कंप्लीट, सो हियर 4, हियर 1 कंप्लीट, 1 2 3 एंड हियर 4. सो दिस इज your 3 carbon containing, 3 means prop, and this is double bond hydrocarbon, so it is from in group, so suffix will be used in, so this is your propene. Similarly here butene, 4 carbons, so we will use but, and one double bond is available. अभी ये डबल बॉन्ड ऐसा जरूरी नहीं है कि यहीं पे आप फॉर्म करो, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, choice is yours. So this is your 4 carbon containing, and this is but, and from alkene group, that's why it is named as a butene. So up till 10 carbons you can do in this manner. Now the third type of hydrocarbons are alkynes, and in this type of hydrocarbons we will use ine, suffix as a ine. So we can here write down this is ine, means in this type of hydrocarbons we know that के कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए. सो फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस कार्बन इज इथाइन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म किया, सो 3 बॉन्ड यहाँ पे हो गए, एक बाकी था हाइड्रोजन के साथ फॉर्म किया, 3 बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गए, एक बाकी था वो हाइड्रोजन के साथ फॉर्म किया, सो दिस विल बिकम C2H2, and 2 carbons means eth, and from alkyne group, so that's why here prefix is, suffix is ine, so it will be ethyne. This is your ethyne. Similarly 3 carbons, कोई भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे किया, सो 3 बॉन्ड यहाँ, एक रिमेन्स एज इट इज, यहाँ पे चारों कंप्लीट हो गए, 1 2 3 and 4 इस कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, 3 बाकी थे वो हमने हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दिए, देन इट विल फॉर्म C3H4, एंड इट इज C3, 3 कार्बन के लिए prop, and it is from alkyne group, so it will be propyne. Simultaneously here similarly we can say butane, so 4 carbons, and कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, बाकी सिंगल बॉन्ड से सब अटैच होंगे. सो इस कार्बन की वैलेंसी देखें, सो 3 हियर कंप्लीट हो गई है, एक रिमेन्स एज इट इज, दैट्स व्हाई इट इज फुलफिल्ड बाय हाइड्रोजन. यहाँ पे इस कार्बन की 1 2 फुलफिल्ड, 2 रिमेन्स है, सो हाइड्रोजन से फुलफिल्ड, ऐसे ही करके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म किया, एंड इट विल ऑब्टेन C4H6 मीन्स C4 ब्यूट, एंड फ्रॉम दिस इज अल्काइन, सो इट विल बी ब्यूटाइन. सो दिस इज योर हाइड्रोकार्बन्स. These are the hydrocarbons, alkane, alkene and alkyne group. Now the saturated and unsaturated hydrocarbons. So hydrocarbons
in which the carbon between carbon single bond is formed is known as a saturated. फॉर एग्जाम्पल अल्केन के सभी हाइड्रोकार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, सो वो सेचुरेटेड है. ये हाइड्रोकार्बन्स जो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड उनके पास होता है, these are the unsaturated hydrocarbons because it does not have tendency to form a bond with another element. So सिंगल बॉन्ड के केस में अगर देखें यहाँ पे कुछ अटैच करना है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा. while in the case of डबल बॉन्ड ब्रेक कर दोगे, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, एक वैलेंसी इधर आ जाएगी. सो डायरेक्टली डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में दूसरे एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो. सो दैट्स व्हाई इट इज अनसैचुरेटेड. वो बॉन्ड अभी भी फॉर्म कर सकता है while the alkanes are saturated hydrocarbons. Now here questions for you, and first is that you have to write down in your homework book what are the hydrocarbons and classify it. Second is why carbon is not losing or gaining 4 electrons. You have to write down the reason in that portion and write about saturated and unsaturated hydrocarbons. This is third question. And fourth question is draw the electron dot structure for methane, CH4 alkane group, and ethane, C2H6. So जो मैंने पहले आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, how to draw the electron dot structure. So this is all about your this topic. In the next lecture we will move on the another topic. Thank you.